We're here with Mr. Pushyamitra Bhargava, the Mayor of Indore. Thank you so much for making time to speak with us. And we're going to be discussing something that is not discussed enough in financial markets, and that's municipal bonds. Indore, as we know, recently listed a green bond to build a solar power plant. But before we get into the nitty-gritties of all of that, could you, sir, give us an overview of how did municipal bonds first arrive in Indore? When did it start? What did it start with the objective of? It's really a matter of great honor and pride for Indore that we have come up with the first green bond of India. The first public issue being introduced by any urban local body in India. But this was the first public issue. Mm-hmm. But earlier we had a private placement. Right. And that was for viability gap funding of the Amrit project. Right. So we have already got a listing in National Stock Exchange. Mm-hmm. But that was purely a private placement. This is first of its kind in India by any urban local body for green energy. Okay. And in the past of the bonds that have been issued, उसमें किस टाइप के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, एक ओवरव्यू दे सकते हैं आप हमें? अमृत 1 जब देश में आया और स्पेशली जब वो इंदौर के लिए आया, तो जिस प्रोजेक्ट में हमारे पार्ट का जो परफॉर्मेंस हमको करना था, स्पेशली वो भी नर्मदा के जल को इंदौर में लाकर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही था, तो 6 प्राइवेट प्लेयर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया था. अराउंड इट वाज ऑफ 1.2 CR. ओके. तो उसके लिए था प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड था. और अभी तक एकदम नियम से टाइमली हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं. ओके. इट वाज प्रॉपरली प्लान्ड. तो अभी तक तो हमने एक भी डेट कभी मिस की नहीं उसकी, और रादर वही जो था उसने हमको AA+ की रेटिंग इस पब्लिक इशू के लिए भी दिलवाई. ओके. ओके. एंड जो आपने स्पेसिफिक ग्रीन बॉन्ड इशू किया है इस बार, आपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पहले इशू करे हैं, इस बार स्पेसिफिकली ग्रीन बॉन्ड है. एक ओवरव्यू उसका भी दे सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड क्यों चूज किया, ना कि सिर्फ एक म्यूनिसिपल बॉन्ड चूज करने के लिए, पावर प्लांट बनाने के लिए? देखिए, इट वाज वेरी इजी फॉर इंदौर टू टेक लोन्स. द अमाउंट ऑफ 300 CR इज very minimal, which could have been arranged by the loans or from the banks directly. But since Indore is always doing something different. Recently, the Prime Minister was in Indore for प्रवासी भारतीय सम्मेलन, और इंदौर को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इंदौर एक दौर है. देश भर में बाकी लोग जब किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, तब तक इंदौर वो काम कर चुका होता है. स्पेशली इंदौर का जो पब्लिक पार्टिसिपेशन से होने वाला काम है, चाहे हमारी स्वच्छता की रैंकिंग जो लगातार देश में 6 बार नंबर 1 है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो इंदौर एक जो चैलेंज फेस कर रहा था, दैट वाज इट्स इलेक्ट्रिसिटी बिल. जलूद में हमारा एक वाटर पंपिंग स्टेशन है, जहां से वाटर पंप होकर मां नर्मदा का पानी इंदौर आता है. फॉर पंपिंग इट और बाकी ग्रेविटी से इंदौर लाने में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा बिल है, इट इज अराउंड 300 CR पर ईयर. ओके. टू कट ऑफ दैट, द बेस्ट ऑप्शन वाज टू प्लांट अ सोलर प्लांट एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो हम वहीं जलूद में एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं, विच इज ऑफ 60 मेगावाट. ओके. तो सिंस इट वाज द जनरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, राइट, हमने सोचा कि जब हम ग्रीन एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्यों ना ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएं इन प्लेस ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स. राइट. जिस नगर निगम का अपना 7,500 करोड़ का बजट हो, प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन अपना करीब 100 CR पर ईयर का हो, so it was very easy for us to take loan at the rate of 7.25%. Okay. Rather than that, एक ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन से, कि जनता भी ग्रीन एनर्जी के लिए सहभागी हो सकती है, वो मैसेज देने के लिए पूरे देश भर को हमने ये ग्रीन बॉन्ड्स लाने का निर्णय किया था. ओके. एंड आपने कहा कि 7.25% पे आप लोन्स ले सकते थे. ये बॉन्ड की लिस्टिंग किस प्राइस पे हुई है? हम लोगों ने इसका हाफ ईयरली रिटर्न रखा 8.25%. 8.25. एंड नेट प्रॉफिट वुड बी अराउंड 8.41. ओके. And you are well aware that on the day one itself, the overwhelming response gave us 6.61 CR. Yeah. तो 661 करोड़ एक दिन में आना is the brand image of Indore.
Right, definitely. So yeah, the Amrut scheme has given municipalities a lot of sort of promotion and incentive to issue municipal bonds and look at alternative fundraising. As and when the Amrut scheme is weaned off, if in the future it's weaned off, do you still see municipal bonds being an important part of how Indore raises funds? I think that the future is of the municipal bonds. Okay. Most of the foreign countries, especially the European countries, always come up with the sovereign bonds. Mhm. We cannot exactly say that it's a sovereign bond. Mhm. Even the finance minister during her budget speech has mentioned that the municipalities and the corporations should come up with the municipal bonds. Right. The future is of municipal bonds. We were happy to announce that before the speech itself. The SEBI has given us the approval. Right. So in my personal opinion, in personal thinking, the future is of the municipal bonds. The very idea of bringing the amendments in the constitution, the 74th constitutional amendment of giving sovereignty and the decentralization of power by that amendment can be achieved by issuing such type of bonds. Okay. And the project that you have in mind specifically right now, the solar power plant, the funds were just raised recently. Any sort of timeline that you can give us on when this project is likely to be completed? We have plans to complete it in next 18 months. Okay. We'll be having the generation after 18 months. Okay. And we'll come to the break even in 9 years. So after 9 years, we'll be reducing around 7 CR per month out of our electricity consumption. 7 crores per month. So that's about 100 crores per, 84 crores per year. Okay. Now, Indore is... In the meanwhile, we'll also come up with the second part of this green energy. Okay. Because the central government has given us subsidy of around 44 CR for 100 megawatt plant. Okay. So we are in the process of bringing the second phase of this green energy plant. It may be a solar plant or it may be a electricity generation by water. Okay. Just sort of moving to my final question here for you now. Indore has issued bonds in the past. Ghaziabad, Lucknow, some other municipalities have also done it on a regular basis. But what one sees is there's a wave of bonds and then it comes down, and then there's a wave of bonds and it comes down. Yeah, so what we essentially see is a wave of bonds that goes up, comes down, goes up, comes down. In the future, when you sort of meet other municipalities, I'm sure some of them have reached out to you about this, what sort of advice would you give them that if this is a fundraising route they want to seriously consider and raise money through this? What are some of the 2 or 3 pointers you would tell them as someone who's gone through it already? So Indore ने जो किया है, it is all because of blessings of our Honorable Chief Minister Shivraj Singh Ji Chauhan, and I am happy to inform you at the date of listing, the Honorable Chief Minister has asked 5 municipalities or the corporations to come up with such type of bonds in a year. Okay. Okay. So there are certain challenges. Ultimately, it's a debt which you create, but you gain the confidence of the people at large. Sure. तो और भी नगर निगम या नगर पालिकाएं लोन लेने की बजाय अगर म्युनिसिपल बॉन्ड्स लेकर आती हैं, एक पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, जनता का विश्वास जगता है और जनता को ये लगता है कि ये काम हमने किया है, तो उस काम को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसके प्रति लोगों का जो रुझान होता है, लोग खुद उसके बारे में बात करते हैं. जी. प्राइवेट लोन अगर आपने लिया है तो जिसने लिया है वो उसी की भाव की बात रहती है. इसलिए मुझे लगता है कि नगर पालिकाओं को, छोटी नगर निगमों को भी, चाहे वो छोटे बॉन्ड्स हों, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले इंदौर में बॉन्ड सड़कें बनाने का एक प्लान बना था कि हम बॉन्ड्स इशू करेंगे और इंदौर शहर की सारी सड़कें बनाएंगे. किसी कारण से बॉन्ड्स तो नहीं आए, लेकिन सड़कें पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही बनी. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे घर के बाहर की जो स्ट्रीट है, इसमें जितना सीमेंट का एक्सपेंस है वो हम लोगों ने किया था. कॉलोनी की पूरी कॉलोनी में एक किसी सड़क को, शहर की किसी बड़क सड़क को पब्लिक पार्टिसिपेशन से 50-60% नगर निगम का पैसा लगा, 40% हम सब लोगों ने मिलकर उसमें लगाया. तो दैट हैज क्रिएटेड अ बॉन्ड बिटवीन अ कॉर्पोरेशन एंड अ सिटीजन. तो हम लोग आज तक शहर की कुछ बड़ी सड़कें जो पब्लिक पार्टिसिपेशन से बनी हैं, उनको बॉन्ड सड़कें ही कहते हैं. Okay, nice.
So this is how you create a bond, a bridge between the public and the officers and the corporations. Right, understood. Now, as you said, it's been 7 months into your tenure as mayor at Indore. Indore has already had a good financial position as a municipal corporation, but anyone looking to improve their financial position, there's multiple municipalities across the country that may not be in such a good financial position. Any one or two tips that you might have for them before they go to the fundraising side? That how can they can improve their own financial situations? Any uniform advice you might have for them? The best would be to collect 100% of their revenue. Okay. जैसे ही वो अपना रेवेन्यू है, चाहे जलकर का हो, स्वच्छता का हो या स्पेशली प्रॉपर्टी टैक्स का हो, उसका 100% सेचुरेशन अगर होगा, सो दैट विल बी एन एसेट, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि जब भी रेटिंग होगी प्रॉपर्टी टैक्स के बेसिस पे ही हम अपना एसक्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि रेवेन्यू कलेक्शन जो हो वो 100% कैसे हो सकता है, इसके नए नए उपाय कॉरपोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज को करने चाहिए। और डिजिटल इकोनॉमी के और इस डिजिटल इंडिया के युग में नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी टू ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। तो आप थोड़ा सा उसको ई कलेक्शन के मोड पे अगर सब लोग जाएंगे, ऑटो डेबिट के मोड पे अगर जाएंगे, जैसे हमारे बिजली का बिल जो है वो हम लोगों ने ऑटोमेटिक पे डाल रखा है कि महीने में 1 तारीख को बिजली का बिल अपने आप कट के अपने खाते से एमपीबी को चला जाएगा। तो वैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स पर्टिकुलर डेट पे कट के आपकी म्यूनिसिपैलिटी में आ जाए, फिर आप 3 तारीख को ये चेक करिए कि कितना बच गया है। तो रेवेन्यू कलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, अंडरस्टूड। Thank you again for making the time to speak with us. Thank It was you very lovely much for to have coming you. all the way from there and promoting our green bonds. No, more than happy to. All right. Thank you so much and have a great day.